Right. Good morning, good evening, one and all, rather. I welcome you to today's live streaming session on zbit.com. We are live not just on zbit, we are live on YouTube as well as on zbit.com live streaming. I'll be here today talking about what has happened today to Bitcoin and to a few other coins as well, Ethereum especially. And we'll see how this massive fall has come into the market today, whether it is gold or silver prices, whether it is Bitcoin. We will dive today into what is arguably a huge, it's a sudden fall that we have seen in the cryptocurrency markets today. आज बहुत ही मैसिव एक ड्रॉप आया है और किसी को नहीं लग रहा था ये ड्रॉप आएगा आएगा तो कब आएगा कुछ किसी को नहीं पता था। अब जो ड्रॉप देखने को मिला है बिटकॉइन में, इट इज वेरी बॉदरिंग एंड नो वंडर वेयर इट कैन गो फ्रॉम हियर। इट इज करेंटली एट 83,000, आप देख सकते हैं। So, but the last 24 hours, last, I would say, not even 24, 18 hours have been destructive in terms of BTC holders, BTC investors, jitne bhi hain. The market has seen a huge sum of money being wiped out from BTC, and it's just that kind of a day, right? यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा और यही हमारी आज की लाइव सेशन का मुद्दा रहेगा, हाईलाइट रहेगा कि कैसे ये इतना सडन फॉल आया है बीटीसी में। और हम देखेंगे कि क्या अब आने वाले दिनों में क्या प्रिडिक्शन करा जा सकता है, क्या क्या रीजंस है इस ड्रॉप के पीछे। देयर इज ऑब्वियसली नॉट जस्ट वन फैक्टर इन्वॉल्व, देयर इज so many factors involved when something like this happens. It is not down to just one factor. Today we will look at all the factors responsible for BTC's terrible fall in the last 18 hours, 18 to 24 hours, right? That is what we are going to see. भाई पहले तो 97,000 तक चला गया था एक हफ्ते पहले तक, और उसके बाद फिर 90,000 के नीचे आया। इट वॉज होवरिंग अराउंड समवेयर नियर द प्राइस ऑफ 88,000, 89,000। 90,000 के नीचे तो था ही भाई। कल तो हद ही हो गई, 80,000 के आसपास आ गया। अगर आप लास्ट वन डे का देखें लोएस्ट, तो इट हैज बीन अराउंड 81,033 तक जा चुका है। ठीक है, तो भाई ये तो भाई बहुत बॉदरिंग चीज हो गई। एकदम से ही ऐसा सडन फॉल आ गया। अब 83 आ गया है, कितना 70s में चला जाएगा क्या दोबारा? अगर 70s में आ गया तो फिर भाई 70,000 तक भी जाने में कोई मुझे लगता नहीं कि देरी होगी, क्योंकि कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो 70 से 80,000 के बीच में जो एक विंडो है, उस बीच में सप्लाई भी बहुत कम है। तो भाई मैसिव डे है अगर आप बात करें कि बिटकॉइन को लेके। And therefore the topic of today's live session, brought to you by me, will be why Bitcoin has crashed today suddenly and so drastically, and what are the real forces behind this fall or sharp drop, right? ये हम आज के लाइव सेशन में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप आखिरी तक बने रहेंगे। मैं सारे फैक्टर्स जो जो इस फॉल को बढ़ोतरी दे रहे हैं, इस फॉल के पीछे रीजंस हैं, राइट?
उससे पहले आई विल जस्ट लॉग इन and look at all the comments that you are going to make here, so that I have my backend open right in front of me, and I can look at different comments that you are making across YouTube and across zbit.com, the app, right? I welcome all of you who are just joining in. Give me a moment. I will just get started with the topic of the day. I will discuss yesterday's topic as well. क्या हमने कल डिस्कस किया था और क्या उसका निष्कर्ष निकला, क्या उसका क्या सीखे आप उससे, कितना आपको याद है, कितना नहीं याद है, सब देखूंगा मैं। Right, I was just checking if everything is right from the audio point of view as well. हाँ, तो भाई कल हमारा टॉपिक था हाउ डू क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक्चुअली वर्क, या राइट, ये हमने कल डिस्कस करा था। और उसमें हमने ये डिस्कस करा था कि कैसे ये डिफरेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं पैसे बनाते हैं, और कैसे इनके पीछे जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस करा था FTX का क्रैश कैसे हुआ था। FTX खुद एक क्रिप्टो एक्सचेंज था, उसका क्रैश कैसे हुआ था। मैंने आपको बताया था कि अ, एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म या एक क्रिप्टो एक्सचेंज को ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीजें आपको मेक श्योर करनी चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म पे हैं, राइट। ये मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस हो गए, और मल्टीपल पेमेंट मोड्स हो गए, और डिफरेंट एडवांस्ड ऑप्शंस हो गए, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। और उसके अलावा मैंने बोला था आपको कि ये समझाया था कि ये मार्केट मेकर्स का क्या रोल होता है, इस ऑर्डर बुक का क्या रोल होता है जो आपके सामने आप देख सकते हैं। और लास्टली मैंने आपको बताया था कि कैसे ये एक्सचेंजेस पैसा बनाते हैं। 3-4 तरीके बताए थे, ट्रेडिंग फीस हो गया, फिर यील्ड्स और स्टेबल कॉइन्स के थ्रू, स्टेकिंग हो गया, लेंडिंग हो गया, फ्यूचर लिक्विडेशन हो गया, ये सब बताया था। और मैंने आपको ये बताया था कि क्यों ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे प्राइस वेरी करता है, क्योंकि सबकी ऑर्डर बुक्स बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के लिए खाली 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। वन ऑफ देम इज द फैक्ट दैट उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतो या हारो, इट डजेंट मैटर टू देम, विन्स और लॉसेस उनके लिए मैटर नहीं करते। व्हाट मैटर्स टू देम इज वॉल्यूम, फीस एंड लिक्विडिटी, ये 3 चीजें मैटर करती हैं। FTX के कोलैप्स के बारे में बताया था, कितना एक बड़ा फ्रॉड करा था उन्होंने अलामेडा के साथ मिलके। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था लो ट्रेडिंग फीस होनी चाहिए, लिक्विडिटी और वॉल्यूम हाई होना चाहिए, सिक्योरिटी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस पूरे होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि उस पे एडवांस टूल होने चाहिए, जैसे आपके स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं, ये टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस जैसी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसकी पेमेंट मोड्स का भी ऑप्शन होना चाहिए, हर तरह से आप पैसे ऐड कर पाओ, ताकि जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, डिफरेंट डिफरेंट तरह के वॉलेट्स हो गए, आप उनको लिंक कर पाओ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और लास्टली मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये भी होता है, ठीक है।
ट्रांसपेरेंसी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि अगर कुछ समथिंग एरर इज सम एरर इज हैपनिंग ऑन दीज क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, देन इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर अबाउट इट विद द यूजर्स एंड ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, राइट। लास्टली मैंने आपको जाते जाते क्रेजी क्रिप्टो फैक्ट ऑफ द डे भी बताया था एक, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और मैंने आपको ये बताया था कि आपको अगर आप 2026 की बात करें स्पेशली, तो आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये बताया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कल हमने डिस्कस करे थे, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू द टॉपिक फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आज हमने देखा है एक मार्केट में सडन फॉल आया है। देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक फॉल इन टुडेज मार्केट एंड बीटीसी स्पेशली अगर आप देखें तो इट हैज गॉन थ्रू अ मैसिव ड्रॉप, राइट, मैसिव डिक्लाइन। व्हाई हैज दैट हैपेंड? कितने तक चला गया था? 81,000, सॉरी, या 81,033 तक बिटकॉइन चला गया था डॉलर्स तक, पर it is now also even now it is around somewhere around 82 88 84, so वो जो 90,000 वाला मार्क है वहां से भी अभी बहुत दूर है। अच्छा, हम पढ़ेंगे कि क्यों ये फॉल आया, आगे की क्या प्रेडिक्शंस हैं, और आपको अब किस डायरेक्शन में आपको बिड करना चाहिए, वेदर यू नीड टू बी मोर बुलिश, यू शुड बी मोर बेरिश, सब पढ़ेंगे। कॉइनडेस्क के डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त जितने भी एनालिस्ट्स हैं और जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं, बिलियनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि they are the ones who have immense knowledge when it comes to the reasons why Bitcoin has fallen so much, right? क्योंकि भाई ये तो मैसिव फॉल देखने को मिल गया है मार्केट में आज ही आज में। अगर आप देखें तो अगर आप गोल्ड के प्राइसेस की बात करें, सिल्वर के प्राइसेस की बात करें, अलोंग विद इट बीटीसी की प्राइस की बात करें, तो भाई मैसिव फॉल आया है। और ये क्यों आया है, ये सारे फैक्टर्स आज हम देखेंगे। कैसे ये अब बढ़ेगा या कम होगा, बुलिश रहना चाहिए या बेरिश रहना चाहिए, ये सारी चीजें आज के लाइव सेशन में हम देखेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहना। मैं बीच में बहुत सारे ट्रेड्स भी करूंगा, और वो ट्रेड्स भी आप देख सकते हैं। मुझे तो भाई मार्केट का रन बहुत बेरिश लग रहा है यहाँ से, तो मेरे ट्रेड्स जो हैं वो जनरली आज जो रहेंगे वो बेरिश ही रहेंगे। अगर आप देखें तो आई डोंट थिंक, सी, ये जो मेजर कॉइन्स अगर आप देख सकते हैं, बीटीसी, ईटीएच, फ्यू ऑल्ट कॉइन्स एज वेल, सोलाना, एक्सआरपी, एक्सयू, सबका एक मैसिव डिप आया है। बट वी विल हैव टू सी हाउ वी गो फ्रॉम हेयर, राइट। तो ये मैं आज के लाइव सेशन में देखूंगा, और आप बने रहिए मेरे साथ। हम काफ़ी ट्रेड्स भी करेंगे बीच में, और न्यूज़ भी देखेंगे कि अब क्या लग रहा है, अब आगे क्या होगा। चलो, अब जो होना था वो हो गया। कल I was in fact myself very bullish. I felt like Bitcoin might go to 95,000, but that's okay. It's a very volatile market. ये जो मैसिव फॉल देखने को मिला है ना भाई साहब, ये इसकी तो क्या जितनी बात करें कम है। ये अब मार्केट किस डायरेक्शन में, मेरे को तो और बेरिश होता है। वही है ना, एक टेंडेंसी होती है कि जब मार्केट गिरता दिखता है कभी कभी, तो फिर ऐसा लगता है अभी गिरेगा ही और ही गिरेगा। पर देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी वेयर इट गोज। पढ़ेंगे काफ़ी सारी चीज़ें और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ है। आज का टॉपिक ही यही है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आई वेट फॉर अ फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन इन, उसके बाद मैं इस टॉपिक को शुरू करूंगा। तब तक अच्छा, आपके सामने ही आर्टिकल्स खोलूंगा सारे, क्योंकि कॉइन बेस ने भैया पूरा चिट्ठी खोल के रख दी होगी बिल्कुल, कि इतना मैसिव फॉल आया है इस पे। इन सारे लोगों का क्या कहना है भाई साहब, लोग क्या क्या प्रेडिक्शन करके बैठे थे। 2 लाख चला जाएगा बीटीसी, मार्च में कह रहे थे लोग। कोई कह रहा था 1,80,000 चला जाएगा। अब आप देखो भाई 80,000 के आसपास मंडरा आ रहा है। तो भाई ये जो जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं ना, इतने ये वाइल्ड होते हैं क्रिप्टो की दुनिया में, स्पेशली बीटीसी इथेरियम को लेके, ये दोनों को लेके, कि भाई ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जेरोम पाल भी आ चुके हैं बाय द वे, सॉरी केविन वॉश आ चुके हैं बाय द वे। जेरोम पाल को रिप्लेस करके ट्रम्प ने अगले फेड चीफ को चूज कर लिया। इसकी वजह से भी आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली असर पड़ा होगा। मैंने बहुत सारे फैक्टर्स नहीं देखे अपने तरफ से, लेकिन
आपके सामने ही मैं आज पूरे इसकी चिट्ठी खोलूंगा, देखूंगा कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बीटीसी के फॉल के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज पोर्टल्स देखेंगे, एक को नहीं देखेंगे, क्योंकि एक वेराइटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, एक हर तरह का पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, तो सारे हम देखेंगे और फिर हम पता करेंगे। अच्छा, बीच में बहुत सारे ट्रेड्स भी करेंगे, तो आज आप बने रहो मेरे साथ, और आई वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, उसके बाद मैं आज का टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, आज सीधा ही अपन न्यूज आर्टिकल से शुरू करेंगे, क्योंकि भाई यहीं पर ही पूरी चिट्ठी खुलनी है आज। ये देखो, क्रिप्टोज रफ डे सेट्स जायंट्स इनटू प्लंज प्रोटेक्शन मोड। डोनाल्ड ट्रंप को ने केविन वॉर्श को चूज कर लिया एज फेड चेयर। भाई ये है, बिटकॉइन इज गोइंग नट्स विद बिगेस्ट वोलेटिलिटी स्पाइक सिंस नवंबर। बिल्कुल ट्रू, दैट इज द टॉपिक फॉर द डे एंड दैट इज व्हाई वी हैव चोजन दिस टॉपिक। How big of a fall this has been. It's been immense. Aj we'll start from here itself. This the spike shows traders rushing for protection through implied volatility is not yet at extreme levels versus the past year. 1.7 billion in bullish crypto positions were liquidated. भाई ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है. If it's wiped out, it's a huge amount that's been wiped out. एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर मोर टर्ब्यूलेंस अहेड, ये भी बात बोल दी गई है। तो भाई आप समझ लो कि क्या आने वाला है और क्या हो गया है, वही तो है ही बहुत बड़ा। उसके बाद क्या होने वाला है और आगे 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 देखो होता है क्या, वही वाली चीज है। बिटकॉइन वोलेटिलिटी स्पाइक्ड हार्ड ड्यूरिंग थर्सडे, मैसिव सेल ऑफ एज ट्रेडर्स रश्ड फॉर डाउनसाइड प्रोडक्शन। क्या डाउनसाइड प्रोडक्शन? अच्छा, अगर आप नए यूजर हो बाय द वे, तो ये बता दूं, जी आई यूजर 404529, नए यूजर हो अगर आप, आपने डिपॉजिट नहीं करा है तो भाई सुन लो, आप लोगों को ही बता रहा हूं। मेरी तरफ से आपको मिलेंगे 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू बिल्कुल फ्री में। आपने कुछ नहीं करना, खाली एज अ न्यू डिपॉजिटर, अगर नए डिपॉजिटर हो, एक बार भी अगर आपने डिपॉजिट नहीं करा है zbit.com पे, तो भाई आपने कुछ नहीं करना। $3 मिनिमम अमाउंट हमने सेट करा हुआ है, काफी लो अमाउंट है, कोई ज्यादा अमाउंट भी नहीं है। खाली $3 आपने अपने जीबिट वॉलेट में डालने हैं, किसी और के वॉलेट में नहीं डालने हैं, मेरे में भी नहीं डालने हैं, किसी के भी नहीं डालने हैं। $3 अपने वॉलेट में आपको डालने हैं और मुझे अपनी यूजर आईडी बता दो, और आपको मेरी तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, बस यूजर आईडी बता देना। लेकिन बता रहा हूं डिपॉजिट कैसे करना है। How can I make money in this application? So for first, if you want to make money on this application, you will first have to deposit, brother. User 404529, you will have to first deposit, and only then you can make money on this application. I will tell you how you need to deposit. When you click on the live stream, this window opens. You can see me here. This is the live stream window. There is a deposit option at the bottom right corner of your screen. There is a deposit option at the right bottom of your screen. When you tap on it, this will open. You have to tap on fiat deposit and then enter three any amount that is equivalent to three or more dollars, right? And then select your payment. Like I'll I'll type in 300. So now it shows 3.26 US dollars.
select payment method and select your payment method, and then deposit three or more dollars. Then you have to let me know your user ID and you will get 20,000 शिवा इनू और 20,000 पेपे फ्रॉम माय साइड बिल्कुल फ्री. ये क्रिप्टो टोकन्स हैं जो आपको मेरी तरफ से फ्री मिलेंगे. राइट, यू कैन यूज दैट टू you do future trades. You can use that money to invest further, whatever you want to do. Right, my name is Godswill. Please help me to know more about this application. So yeah, so it's a futures and spot trading crypto platform that you have joined, my brother Godswill. All you have to do is deposit three or more dollars first of all, so that you can get this deposit offer from my side. If you so that you can get this bonus, crypto coin from my side, you have to deposit three or more dollars, and then you can trade in the market. This market right in front of me, it is there on your app as well. At the bottom center it says market, where you can go and you can trade with that money. Right, it's a crypto platform. We come and do trading over here in terms of crypto tokens, cryptocurrency coins. We buy and we sell, right? Assets. You can buy Bitcoin. If you have a lot of money, you can buy Ethereum or any other coin, right? But first you have to deposit for that. So I hope that you understood what this platform application is all about. You will first have to deposit before you make any money here. Right. On that note, we'll be making a few trades here and there, and then we will start with the last 1 hour. ETH has also fallen a bit in the last. I want to the deposit, but I can't. Uh, you will have to explain me what problem exactly you are facing. It's a very simple process to deposit money. The deposit option is right at the bottom of your live stream. Yeah, it shows here, right? This is the live stream platform, right? You can see me here. Now, here is the deposit option. You have to tap on deposit, right? It says I don't have crypto assets. So if you want to add crypto assets, you'll have to tap on fiat deposit and link your okay, add some money here. It says $3.26 now, right? Now you need to select three or more dollars. You can deposit $10, $100, $200, $300, anything, and then select the payment method. It says that I will pay 300, I will receive 3.26 US dollars, right? Now you have to select a payment mode. These are the payment modes available in my country. Now whatever payment modes are available in your country, it will show here, and then you can tap and that payment mode will open, and you can then add more money to your account, right? It is a very simple way. Hello to fully mong 1026071. I welcome you to the live stream. I hope that you have not faced a lot of sadness after this tremendous fall in BTC, right? Uh,
Bitcoin has fallen a lot in the last 12 hours, in the last 16 to 18 hours, 24 hours, and it has fallen a lot. We are just trying to understand what are the reasons behind this tremendous drop, right? I am looking at a few trades myself in the last 16 minutes. 2736 per gaya hai. All right. Last 4 hours we 268 total view गया है. Okay. जीरो 27 on जीरो तक करते हैं. All these coins have fallen so much in the last, you know, 24 hours because BTC has obviously fallen a lot, right? आप देख सकते हैं यहाँ पे. Please can you help me to deposit it into my account, please? Yes, brother, I am trying to help. I told you the process. If you have not understood, you can try again. Go to the official Anchor broadcast. There is a deposit option here. Tap on this. When you tap on this will open the screen, right? Click on fiat deposit and then deposit how much, no matter how much you want to deposit, right? If you are a first time depositor, just let me know the user ID so that I can give you from my end 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side absolutely free. You can deposit no matter how much you want to, and I will be giving you from my side 20,000 Pepe or Shiba Inu absolutely free. I'm trying to explain here. You have to, put money over here. This is the amount, for example, I've added. Now you have to 3000 INR is the price that I have added. It shows that I'll be getting 32.61 US dollars, right? And you need to then select the payment method. These options basically different payment methods will show up here. Use any one of these payment methods and process the payment. Once you've done that, just let me know uh, how much you've deposited, and you will be able to see this money in your wallet, right? You'll be able to see this money in your, I'll show you where, in your wallet, right? This is my balance. In the balance part, you will be able to see your balance, right? Here at the right corner, bottom corner, you will be seeing your money that you have deposited at the right bottom, right? All right. Now let me come back to the topic. Before that, I will be making a few trades here and there.
Now, I was going through this particular article. The spike in volatility came as markets digested renewed macro uncertainty, including rising government shutdown risks and fresh political noise around the future leadership of the Federal Reserve. Volatility also climbed in traditional markets, with the VIX rising in parallel, reinforcing the sense of a broader risk of move rather than a crypto only event. The message from derivatives market is simple. Bitcoin is longer calm. Bitcoin is no longer calm, and traders are bracing for more turbulence ahead, with some targeting the 70,000 mark in the coming weeks. We will have to see that, right? Because it is a very big statement that has been made here. Tumbling mark cryptos roughly sets giants into plunge production. The crypto markets beating on Thursday spurred industry heavyweights into plunge prediction mode, a term for coordinated moves to steady a sinking ship. As Bitcoin neared 81,000, the lowest since November, and analysts warned of a deeper drop. Finance sprang into action. The large commercial moment said it would switch its user prediction for Bitcoin by BTC to Bitcoin. Oh, 800 million. In other words, the market needs a clear bullish catalyst to stabilize, and the odds appear stacked against that. Dollar liquidity is tightening, as noted by Mailson, and the rise of Canada's former hawkish Fed official who cited inflation risks after the 2000 crash as a preferred candidate for the central bank's chairmanship is seen as a generally adverse development for BTC and other risk assets. Still, though, a hawk wash has on occasion spoken positively about Bitcoin and has had investments in crypto adjacent projects in the past. Coin has shown no respite so far. It recently traded near 82,700, slightly up from overnight lows, but still down over 6% on a 24-hour basis. Other major tokens posted similar losses. BTC's market dominance slipped to 59.16%. The This might signal altcoins' relative resilience from underlying demand, setting them up for a big move higher once sentiment stabilizes. But that's not necessarily true. Altcoins underperformed throughout Bitcoin's bull run from early 20. In traditional markets, precious gold, metal like plus pullbacks after once these trends turn out of steam, money will rotate back to crypto. We'll see if that plays out. Stay alert. Now, the big news: President Donald Trump has nominated Kevin Walsh as the Fed chair, Federal Reserve chair, right?
If you have not deposited so far, what are you waiting for? Please go ahead and make a deposit on zbit.com. It's a completely safe and secure app, and I hope that you will be making some kind of a deposit today, and that will help you kickstart your journey, crypto journey on zbit.com. And I have a deposit offer for all of you people who are new depositors. I am giving away 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side absolutely free of cost. You don't have to do anything else. You just have to deposit three or more dollars. It's a very nominal amount, it's a very small amount. I hope you can do that, and you can kickstart your journey uh, by letting me know your user IDs after you've made that deposit. And once you've made that deposit, you can kickstart your journey on zbit.com, where you can trade on a daily basis and make uh, future predictions as well, right? Right. Let's now look at this news. President Donald Trump has nominated Kevin Watts to be the new chair of the Federal Reserve. What do people have to say about it? We will look at that. Okay, there's not much at the moment about this news. Okay, Watts served on the U.S. Central Bank's Board of Governors between 2006 and 2011. This youngest person to do ever do so. He was considered the front runner to be Trump's pick, something which may have played a part in Bitcoin's dive to nearly 81,000 late Thursday, as odds of Watts' nomination spiked on betting sites. Wash was an investor in a cryptocurrency project called Basis, which described itself as an algorithmic central bank. He has also served as an advisor for Electric Capital, a VC firm focused on crypto, blockchain, and fintech. However, his appointment is considered to be by some to be bearish for risk assets such as BTC, given his emphasis on monetary discipline, which could mean higher real interest rates. 0.7% लिफ्ट भी आया मार्केट में भी थोड़ी देर पहले, just after his announcement.
Watch's track record is adding fuel to the fire during the global financial crisis that lasted from December 2007 to June 2009. Watch repeatedly cited inflation risks even as the global economy teetered on the brink of a full blown deflation. For instance, in September 2008, the month when Lehman Brothers collapsed, Watch said, I am still not ready to relinquish my concerns on the inflation. 7 months later, when the Fed's preferred inflation measure was at 0.8% and the jobless rate at 9%, he said, I continue to be more worried about upside risks to inflation than downside risks. Several observers say Watts is a wrong pick for the Fed that's expected to toe Trump's line. Thankfully, even as Fed chair, Watch cannot dictate rates alone, as the board of governors votes collectively, diluting any single voice. It remains to be seen if Trump goes ahead with Watch. He has gone ahead with Watch. Now let's see what changes brings to the nice.
Right. Welcome to Chandani. I welcome you to the live stream. If you've just joined, if you're a new depositor, I have an offer for you. It's a giveaway offer. I am giving you 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side, absolutely free of cost. You don't have to do anything. You just have to deposit three or more dollars into your own zBit account, and you will from my side get 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost. Just let me know your user IDs once you've deposited, right? That is the offer that I have in front of me. Now we will look at different factors as to why this Bitcoin fall has happened. It's a tremendous fall, if you ask me. And now the predictions are of Bitcoin even heading towards a low of 70,000 as well. So we will have to see that. We will have to wait for that and see where Bitcoin goes from here. But meanwhile, we will look at how other altcoins have also behaved. This is the news that is everywhere. Hi Chandani, वेलकम। भाई आज का टॉपिक तो यही है। बिटकॉइन क्रैश हुआ है, 82,000 के आसपास अब आ गया है। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे सामने, और आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी होगा। This is the tremendous fall that Bitcoin has gone through in the last 16 hours, I would say, and काफी bearish pattern अब बनता सा दिख रहा है। और इसमें अब कहा नहीं जा सकता है। A lot of people are predicting, experts, ऐसे रैंडम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, experts are predicting that Bitcoin can be expected to go below 70,000 as well। 70,000 तक जा सकता है। कितनी जल्दी है शार्प फॉल आएगा या धीरे धीरे आएगा, कुछ नहीं कह सकते अभी। बट ये है भाई मार्केट का सीन। उसके बावजूद भी मैंने कुछ ट्रेड्स करे हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा नेगेटिव में ही चल रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट क्या करें भाई, ऐसा सा चल रहा है मार्केट। पता नहीं कभी बुलिश रन पे देखने को मिलेगा अभी। अ, बहुत मुश्किल है अभी कहना। बट लेट्स सी ये क्या आर्टिकल कह रहा है। ये इमेज ही सम अप कर रही है काफी सारी चीजें तो। US listed spot Bitcoin and other exchange traded funds suffered heavy redemptions on Thursday, with nearly 1 billion yanked in single session as crypto prices slid sharply and risk appetite evaporated. Investors withdrew $817.9 million from US spot Bitcoin ETFs on Jan 29, the largest daily outflow since November 20। भाई नवंबर 20 से इससे ज्यादा पैसा निकला था लास्ट नवंबर 20 को। उसके बाद अब निकला है जाके। नवंबर 20 से ले लो आप, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, 2 महीने बाद इतना मैसिव फॉल दिखा है। इथर ETFs और Ether ETFs also saw sustained selling, losing 155.6 million of the day। ये देखो भाई चार्ट, टोटल बिटकॉइन स्पॉट ETF हिस्ट्री डेटा। अब आप देखो कि अगर हर रोज थोड़ा कुछ, इस दिन जैसे यहाँ से देखते हैं, ठीक है, जनवरी 8 को इतना पैसा निकाला गया था, $398.95 million। अगले दिन उससे कम निकाला गया, फिर 116 मिलियन पोर हुआ, फिर 753 मिलियन पोर हुआ, 843 मिलियन पोर हुआ, 100 मिलियन पोर हुआ, 394 मिलियन निकाला गया, 483 मिलियन निकाला गया, 708 मिलियन निकाला गया, 32 निकाला गया, 103 निकाला गया, 6.84 मिलियन डला। निकलता सही चला जा रहा है। बट अब जो निकला है ना आज भैया, मैसिव मैसिव आउटफ्लो।
85,000 से कम हो गया, 85,000 क्या भाई, ये देखो 82 पे आ गया है, और भी गिरने की संभावना है। 81,000 पे आ गया, बड़ा ही है मतलब उस हिसाब से। बिफोर नियरिंग द 83,000 मार्क इन एशियन मॉर्निंग आवर्स फ्राइडे, ये थर्ड ड्रॉप मोर देन 7% ऑन द डे। So it's been that kind of a day for Bitcoin and for cryptocurrency guys। काफी ज्यादा रफ डे जिसे कहते हैं ना, वो रहा है। और इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। अच्छा, अब ये भी पढ़ेंगे कि क्यों ये चीजें हुई हैं, क्या चल रही है न्यूज क्रिप्टो रिलेटेड, सब देखेंगे। अच्छा भाई, ट्रम्प ने बाय द वे केविन वॉश को भी चूज कर ही लिया है, ये भी आप देख ही रहे हैं। उनको काफी नेगेटिव माना जा रहा है, मतलब उनसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब जिसे कहते हैं ना, वो नहीं आ रही है। बैड न्यूज मान रहे हैं उसे लोग काफी, बिटकॉइन के लिए भी और फॉर प्रीशियस मेटल्स की जो प्राइसेस हैं उनके लिए भी। ये है केविन वॉश बाय द वे। और व्हाई वी विल लुक एट दैट। वो काफी लो इंटरेस्ट रेट्स को फेवर करते हैं, इसलिए काफी लोगों का अ, अच्छा यही नहीं, बाय द वे गोल्ड प्राइसेस भी गिरे हैं, एक बार गोल्ड और सिल्वर भी देखेंगे हम। गोल्ड एंड सिल्वर, ये देखो भाई, ये भी बहुत मेल्ट डाउन हुआ है यहाँ पर भी। Why gold, silver and US stocks just saw extreme volatility. For a few chaotic hours, global markets moved like they had lost their anchor. Gold collapse, silver plunge, US stocks slid, and then almost as violently, everything snapped back. In one of the most volatile trading sessions in recent memory, nearly 9 trillion in market capitalization swung across gold, silver, and US equities within a single day. Was staggering, and so was the sweep. Gold long term. भाई गोल्ड क्या मैं आपको बताऊं, सिल्वर प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा मैसिवली गिरे हैं। सिल्वर was even more brutal. Prices plunged almost 12%, wiping out roughly 750 billion before rebounding to recover 500 billion. The metal had only just touched record highs days earlier, riding its strongest monthly surge since 1979. Yes, equities mirrored the chaos. S&P 500 shed about 780 billion intraday before recovering $530 billion. 5,600 डॉलर तक गोल्ड गया था, उसके बाद फिर वापस $5,100 पे आ गया।
or that single move wiped out an estimated 3.4 trillion from the total value of all gold above ground. Silver's fall was sharper still after surging more than 68% in January. The metal slipped from above $121 per ounce to around 107 as as fear spread from commodities into technology stocks. Those fears hit Oracle did drop 5.4% immediately. The turbulence was not confined to the US and India. Gold prices on the M6 were nearly 12% today, coming from 157 before rebounding sharply to around 169 as bargain hunters stepped in. सिल्वर प्राइसेस ही देख लो भाई. हाय चांदनी. तो भाई it's been a day where we've seen crashes from all over. The gold, silver और बिटकॉइन सब गिरे हैं, tremendously गिरे हैं, and we will have to see where you know this market goes from here. भाई बीटीसी और गिरा है, थोड़ी देर पहले 567 तक आ गया है. ईटीएच भी देख लेता हूँ, ये मेरा ट्रेड चल रहा है बाय द वे. $3 ही आया है, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है. कल के बाद ना थोड़ा सतर्क रहना पड़ रहा है. ईटीएच 27-32 पे आ गया है. ईटीएच हमने एंटर करा था 2743 पे. $13-14 हमारा प्रॉफिट हो गया ईटीएच पे ऑलरेडी. और एक बार एक सी भी देख लेते हैं. वी विल कीप मेकिंग मोर ट्रेड्स. सोलाना पे भी हमने करा हुआ है. there's a $11 profit so far. हाइप कॉइन का तो हाइप ही खत्म होता जा रहा है भाई. गुड आफ्टरनून Simon Turf.
From Nigeria, all the way from Nigeria. I welcome you to the live stream. I will be going in for a short break. When I come back, I will look at various factors, various reasons as to why BTC has fallen. That is the highlight of the day. We'll make more trades as well. I'll be back in the next few minutes. In the meantime, stay tuned and we will be making more and more trades in the next few minutes. Stay tuned.
Welcome back to the live stream, guys. I hope that you are joined in and are trading on zbit.com. I am certainly trading. The market is in a bearish run right now. And good afternoon to Siman Tarf as well. The market is in a bearish run. It has been in a bearish run since last 24 hours, I think. Bitcoin has slipped from somewhere around 88, 89,000 to 82,000 right now. It has even gone to 81,000 in the last few hours as well. But it has stabilized to somewhere around 82 right now. And I have traded as well, but I don't see much of a I think I am going to increase my leverage a bit. I can't do that right now. I think anything that I'll be doing here would be bearish. That is the kind of market we are in right now because it is a very bearish uh, looking market right now. We will look at the latest news as well. क्या क्या चल रहा है? Vitalik Buterin to spend 43 million on Ethereum development. He is the founder or co-founder of Ethereum. ये बंदा है Vitalik Buterin, by the way. For user 487196, if you've just joined, we drew 16,384 ETH worth about 43 million at current prices to deploy it toward open source security and privacy projects. As it seeks to deliver an aggressive scaling roadmap while ensuring it can sustain itself over the long term. In a post on X, Buterin said he has personally withdrawn 16,384 ETH worth roughly 43 million at current market prices to support a broader effort to build an open source, secure, and verifiable full stack of software and hardware. Ether was trading around 2720. अभी देख लेते हैं कितने पे 2735. On Tuesday, down significantly from its October peak near 4831 as crypto markets have pulled back in recent weeks, but framed the initiative as extending beyond Ethereum itself with potential applications across finance, communications, governance, operating system, and secure hardware. 666 million है इनके पास और इन्होंने 43 मिलियन निकाले 663 मिलियन है ठीक है काफी पैसे वाले इंसान है सारे हम अपने एक बार ट्रेड्स देखते रहेंगे if you're a new depositor scott cr7 welcome to the live stream brother and if you've just joined and if you've not made a deposit today I would suggest you to go ahead and make a deposit. The market is in a bearish run right now. It has been so since the last few hours. Bitcoin has seen a tremendous fall in the last few hours,
and because of it, Ethereum has also fallen. A few other altcoins have shown quite a fall in the last few hours or so. Go ahead and make some kind of withdrawal, uh, deposit. गिरती सी दिख रही है भाई मार्केट तो आज। The most important driver of today's Bitcoin crash was leverage concentration across derivatives market. So a variety of reasons has been seen for the fall of Bitcoin to somewhere around 81,000. Uh, this may hyperliquid
की तरफ से 598 मिलियन फोर्स क्लोजर्स में चला गया, 94% उनमें से लॉन्ग पोजीशंस थे. बाइबिट followed with 339 million, Binance around 181 million in liquidation. तो इससे दिखता है कि how risks had actually cluttered across a few venues rather than being evenly distributed. The immediate question facing traders is whether Bitcoin stabilizes above 80,000 or continues lower towards the 75,000, 73,000 range. Short term technical projections suggest further downside is possible if macro conditions deteriorate and ETF outflows persist. Indicate why trading ranges ahead near term and the custom between reflecting uncertainty rather than insurance and know that the wheel of near term process with some long term manipulations that are lost solely that behavior. Protect against short. For now, Bitcoin is not dying, it is deleveraging. Whether that process ends nearly 80,000. तो भाई ये कह रहे हैं कि वेलकम टू यूजर 846227 फ्रॉम इंडिया. What is clear is that this was not a retail panic, it was a system calibrating under stress, and markets rarely finish that process in a single day. So, for now, Bitcoin is not dying, it is deleveraging. Whether that process ends near $80,000 or pushes lower will depend less on crypto narratives and more on macro stability, institutional flows, and policy signals in the weeks ahead. देखने की बात होगी कि बिटकॉइन यहाँ से और गिरता है या बढ़ता है. मेरे को इंडिकेशंस जो समझ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है 76 ये सही लिखा है, इसी रेंज में रहने वाला है. लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में.
Right. So if you are joined in on zbit.com or on YouTube and you are looking at my live stream, today we are discussing about the sudden fall of Bitcoin and the sudden fall of a few other altcoins as well. There has been a drastic fall of prices when it comes to the cryptocurrency market, not just cryptocurrency market, gold and BTC and silver, all of these commodities have fallen a lot in the last few hours or so. The market, it does look like, is headed into a bearish kind of a run. You might expect to see Bitcoin going towards the 76,000 to 80,000 mark. At the moment, it has stabilized a bit. It is some trading somewhere around 82 700, but the signs are all there. It looks like Bitcoin will fall further, and we will have to see how much it falls. Right now, we have made our own trading done as well. I welcome user 245571 from Nigeria. I welcome you, brother. And if you've not deposited so far on zbit.com, I would suggest you to deposit and get your crypto journey started on a positive note on zbit.com. uh, I'm here to guide you, help you in how you can make a withdrawal. If you've not deposited, go ahead. I can also give you a deposit offer that will help you, maximize your profits and your portfolio value as well. Because I'll be giving you, 20,000 Pepe or Shiba Inu, whichever of the two, one of the two, and you can use that money to eventually trade in the crypto market, right? And the market, I'm telling you, is heading it to a bearish run. So don't miss out on this opportunity. Deposit as much as you can on zbit, and if you don't know how to deposit, there is a deposit option available right at the bottom of the live stream that you see here, right bottom of your screen. On, you see the deposit button, tap on it and you will see a fiat deposit option. Tap on that as well, key in the price that you want to pay, or you want to deposit. No matter how much you want to deposit, you can deposit. For an example, I'm showing you 3,000 rupees I'm adding right now. It has converted into USDT, and I can now add $32.61 into my account. Then you select the payment method, and you select one of the payment methods through which you can add money to your deposit wallets. Once you've done this, just let me know your uh, user IDs, and then I'll be able to give you your well deserved 20,000 Pepe or 20,000. I'll show you Pepe. This is 20,000 Shiba Inu, by the way, right? You can see on your computer screens. This is 20,000 Shiba Inu coins I can give you, or I can give you 20,000
Pepe. This is Pepe. Please, I don't understand your English. Okay. uh, do you want me to talk in Hindi? I can talk in Hindi also. हिंदी? क्या मैं हिंदी में बात करूं? अगर आप चाहते हैं तो मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मेरे को भाषाएं आती हैं। आई नो बोथ द लैंग्वेजेस। 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू मैं आपको अपनी तरफ से दे सकता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस $3 अपने अकाउंट में ऐड करने हैं, डिपॉजिट करने हैं, और उसके बाद मैं आपको दे सकता हूं 20,000 ये वाला कॉइन या 20,000 शिबा इनू ये वाला कॉइन। इनमें से एक दे सकता हूं, ठीक है? तो आप डिपॉजिट करिए, जरूर करिए, और जब आप कर लें तो एक बार मुझे अपनी यूजर आईडी बता दीजिए। मार्केट तो भाई हेडेड है बेरिश पैटर्न की तरफ। अब BTC is trading somewhere around 82,000, 834, but it was yesterday at 87,000, 88,000 इसके आसपास था। काफी मार्केट में डिप आया है, फॉल आया है, ड्रॉप आया है, पर इसी मार्केट में नहीं आया है, गोल्ड में भी आया है, सिल्वर में भी आया है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट से लेवरेज जितना है वो सारा निकल रहा है। पर आगे देखना पड़ेगा, क्या बिटकॉइन 75,000, 76,000 के करीब जाएगा या बिटकॉइन बढ़ेगा यहां से। अभी तक के जो आसार हैं वो घटते से ही दिख रहे हैं, बेयरिश ही लग रहा है मार्केट जाएगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट? इट्स अ वेटिंग गेम। देखना पड़ेगा रुक के कि भाई मार्केट किस तरफ जाता है। थोड़ा स्टडी करो। मैं वही आपके सामने कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जैसे ये सारे आर्टिकल है ना, मैं देख रहा था। पर ये बात बिल्कुल सही है, बिटकॉइन इज गोइंग नट्स विद बिगेस्ट वोलेटिलिटी स्पाइक सिंस नवंबर। इतना पैसा कभी मार्केट से गया नहीं है जितना एक दिन में गया है। पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ डिपॉजिट करो। और मैंने खुद ट्रेड करे हुए हैं, आप देख लो, $5 आपके सामने अभी अभी कमाया है मैंने। मैंने तो बेरिश ही जा रहा हूँ बहुत ज्यादा। आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो फर्दर डाउन फ्रॉम हियर, सो आई मेड अ प्रॉफिट एज वेल ऑन दैट। आई मेड। सबसे बढ़िया बात है भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, आपको क्या लगता है मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा? इस पे आप पैसे बना सकते हो। मेरे को लगता है नीचे जाएगा। मैंने नीचे का प्रिडिक्शन करके शॉर्ट ओपन किया है, और अब आप देख लो मैं प्रॉफिट में भी हूँ $6 के। अच्छा, यही नहीं, इथीरियम के भी प्रॉफिट में हूँ भाई। ये देखो, इथीरियम $11 का प्रॉफिट हो गया, $11 प्रॉफिट। ये XRP है। XRP में मैंने कुछ भी पोजीशन ओपन नहीं करा है। अच्छा, ये कर लेते हैं हम अभी। XRP में भी कर लेते हैं ब्रदर। ये देखो भाई, चारों जगह प्रॉफिट में हूँ, सब में प्रॉफिट है। 4 पोजीशन ओपन है। $6 का प्रॉफिट BTC में, $7 का प्रॉफिट BTC में, $13 का प्रॉफिट इथीरियम में, $3 का सोलाना में है, $4 का XAU में है। बढ़िया चल रहा है अपना। और भी बेरिश प्रिडिक्शन के साथ अपन और भी कमा सकते हैं। XRP में भी कर लेते हैं। XRP में मैं कहाँ पर है भाई, लोएस्ट रहा है 1.7082 वन डे में। ये तो 30 मिनट्स में कितना रहा है? नहीं रहा है तो हम 1.75 पे ही कर लेते हैं भाई। या छोड़ो, XRP को रहना दो, किसी और में करते हैं। पंप या एडा में करते हैं, कार्डानो में। लोएस्ट गया है ये 3217 और 30 मिनट में।
3215 तक कर सकते हैं। 3217, 3228 कर देते हैं यार। Again, I've gone short. User 561085, welcome to the live stream, brother. I hope that you are liking our content and you are making trades on zbit.com. नहीं कर रहे हो तो कर लो। यही मेरा word of advice है। Keep depositing on zbit.com. I've been saying this since the last few hours. The market has seen a bearish run in the last 24 hours. Bitcoin has fallen a lot, right? अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने केविन वॉश को नॉमिनेट कराया एज फेडरल चेयर के चीफ और फेडरल रिजर्व के चीफ, और इनकी वजह से भी मार्केट में ये भी एक फैक्टर है दैट ही हैज बीन chosen and nominated to come to power, and that is also another factor why BTC has fallen, because there is a negative sentiment about him, and people are, although the market did see a dip when he came, it has stabilized a lot now. It has stabilized to somewhere around 82, 83, and there are still expectations that it will go down even further in the next few hours or next few days. 75,000, 76,000 तक BTC की जाने की संभावना लग रही है। User 561085 streamed all the way from India. If you've not made any deposit so far, I can help you make a deposit. I can give you from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost, अगर आपने अभी तक कोई डिपॉजिट नहीं करा है। भाई मैं ये डिपॉजिट्स के वजह से ही अभी प्रॉफिट में हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई, झूठ नहीं बोलता मैं। ये देखो 5 पोजीशन ओपन है। बीटीसी पे $10 का प्रॉफिट, इथीरियम पे $20 का प्रॉफिट अभी ओपन है पोजीशंस। सोलाना पे 3, 3.5, 4 डॉलर का। एडा पे अभी अभी लगाया है पोजीशन, और एक्सयू पे 6.7। अदा पे भी अब पॉजिटिव देखने को मिल रहा है स्टार्ट। तो भाई मार्केट बेरिश रन पे है, पैसा बना लो अपना फटाक से और निकल लो, फायदे में रहोगे। डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। I am giving you this trade from my side that it is a time to get bearish on the market and fatafat make your money and leave, right? Please do join and deposit as much as you can, because the market is headed in a bearish, you know, bearish pattern. You can go ahead and make your money right now.
User 561085, if you're still on the live stream and if you've not commented, please comment with whatever questions that you have regarding today's topic as well that we have discussed so far in the last 2 hours or so. Once you've done that, I will be happy to know that you are listening, because I will be heading for a very short break. When I come back, I'll be answering all your doubts and questions. I welcome all of you users to the live stream who have just joined. Today, we are looking at a bearish market. I have put all my money. You can see I don't have anything available right now, right? I have put all my money into positions where I expect the market to go bearish. तो भाई देख लो क्या चल रहा है। ये देखो 6-7 डॉलर इधर कमा लिया अपन ने। बीटीसी 10 डॉलर इधर आ गए हैं। ये 5 मिनट की बात है, आखिरी 5 मिनट में करा है मैंने ये ट्रेड। इथीरियम में भी 18 डॉलर इथीरियम से आ गए। ध्यान रखूंगा इस पे पूरे टाइम, और उसी हिसाब से एक्सयू में 6 डॉलर आ गए। भाई हर जगह पॉजिटिव में हूँ आज, तो क्या बात है। XRP पे मैंने नहीं लगाया है, XAU में लगाया है आई थिंक। अच्छा हाँ, 5-6 डॉलर देख रहा हूँ यहाँ पे। सोलाना पे लगाया था, 3-4 डॉलर इधर आ गए। और एडा पे भी लगाए हैं, ये नेगेटिव में चल रहा है 1 डॉलर के, कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी और इथीरियम मेरे को बढ़िया कमा के देंगे, मुझे पता है आज का दिन ऐसा ही रहेगा। ट्रेड कर लो भाई, बोल रहा हूँ डिपॉजिट करो। मार्केट बेरिश रन पे है, पूरा प्रेडिक्शन बेरिश करो और भाई फायदा ही फायदा है आपको, बाकी आपकी मर्जी। On that note, I'll be taking a short break. When I come back, I'll come back with a newer topic, very much in relation to what is happening in and around the world of cryptocurrency and geopolitical reasons, as well as looking at this particular fall, sudden sharp drop in Bitcoin prices as well. और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रम्प का क्या कहना है अभी इनके न्यू ये केविन वॉश की साइनिंग पे, और कैसे वो मार्केट को इफेक्ट करेगा उनका आना। क्या सेंटिमेंट पैदा होगा मार्केट में उनके आने की वजह से, ये सब हम देखेंगे। सिल्वर So I was reading something about what exactly. I welcome user 600916 to the live stream.
Bro, if you've not deposited so far, and if you're looking to start your journey on zbit.com in the crypto industry field, I do have a giveaway offer. If you've just joined, I'm just letting you know. I am giving you 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side, absolutely free of cost. You don't have to do anything. Just have to deposit three or more dollars into your zbit account, right? और चलो आप चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं अभी बस ये पढ़ रहा था कि एक सही टाइम है या नहीं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में इन्वेस्ट करने का। तो कोई कह रहा है कि नहीं है अभी गोल्ड में सही टाइम प्रिडिक्ट करने का, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी स्पेशली विद ट्रम्प अराउंड, एंड a few predictions related to silver going to $150 per ounce in the time soon. It is currently at somewhere around 100 $115, 100 150 डॉलर तक जाने की उसकी संभावना है। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रा देख रहा था कि क्या सही टाइम है या नहीं है। बट बहुत अनसर्टेनिटी बनी बनी हुई है माहौल, बहुत अनसर्टेनिटी का है, क्योंकि आज आपने देखा ही जिस तरह से कैसे ये फॉल आया है, मैसिव फॉल आया है।
Right, welcome back to the live stream, guys. Bitcoin looks like it is going to 83,000, but मेरे अब जो ट्रेड्स थे वो उल्टे पड़ने वाले हैं. पॉजिटिव में था, अब थोड़ा नेगेटिव की तरफ बढ़ते हुए. फिर भी मैं थोड़ा बेरिश ही रहूंगा मार्केट में, मैं सही बताऊं तो. बढ़ते हुए दिख तो रही है, लेकिन I will still be bearish on the market. Let's see where it is heading towards, and then I will disclose my trades. Waiting game है तब तक. If you've just joined on the live stream, I'm sorry. तो भाई, क्या ट्रेड्स आप लोग कर रहे हैं? एक बार मैं अभी अपने ट्रेड्स की तरफ देख रहा हूँ. मैं तो अभी भी भाई बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ बीटीसी के लिए. लेट्स सी क्या होता है अभी, क्योंकि अभी बिटकॉइन जैसे है 83,000 के और गया था दोबारा. अब देखते हैं किस तरफ जाता है दोबारा. मैं तो जीरो प्रॉफिट पे हूँ ना. नो लॉस नो प्रॉफिट.
Welcome to user 1026481. If you've just joined and if you've not made the most of the deposit offer that I have with me right now, I'm just letting you know. You can deposit at least three to you can begin by depositing a minimum of $3. You can deposit as much as you want, but the minimum amount is $3. And if you do that as a first time depositor, I will give you from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost. You just have to let me know your user IDs after you have made the deposit, and then I will be giving you 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu into your own zBit account from my side absolutely free of cost, right? That is the deposit offer I have with me right now. If you want to make most of it, do deposit. I am making a few trades here and there. I'm being very bearish on the market, but the market has seen a low of Bitcoin has seen a low of 81,033 तक जा चुका है बिटकॉइन आज लोएस्ट अगर मैं बताऊं 1 डे पीरियड के हिसाब से आखिरी आधे घंटे में लोएस्ट जो गया है वो 82,698 तक गया है मेरा जो है नेगेटिव में अभी चल रहा है पर कोई दिक्कत की बात नहीं है आई एम श्योर दैट मार्केट यहाँ से थोड़ी और नीचे ही जाएगी बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है इस पे मैं अपनी नज़र गड़ा के रखूंगा बना के रखूंगा और मीनवाइल हम देखते रहेंगे क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है मार्केट में क्या चल रहा है आज ऑब्वियसली बहुत बड़ा दिन है क्रिप्टो ने इतना बड़ा ड्रॉप हुआ है और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श को फेडरल रिजर्व चेयर पर्सन बना दिया है और उन्होंने ये जेरोम पावल को हटा दिया है और मतलब हटा के दिया उनका टर्म खत्म हो गया और इसकी वजह से मार्केट में क्या चेंज आएगा वो हमें देखना पड़ेगा Bitcoin did enjoy a brief 0.7% lift immediately after Trump's announcement before returning to the 82,600 mark. अच्छा अब और बढ़ गया 82 क्या 83 तक पहुंच गया ऑलमोस्ट देखते हैं अब क्या होता है आगे कहाँ मार्केट जाता है अच्छा आगे बढ़ते हैं खैर आज के टॉपिक में वेरियस रीजंस वो भी देखेंगे हम कि क्यों बिटकॉइन गिरा है कभी कभी कहते हैं ना लोग कि बिटकॉइन से पैसा निकाल के लोग सेफ हेवन एसेट्स में डाल रहे हैं आज वो वाला केस भी जो है वो थोड़ा उल्टा सा होता दिखाई दिया है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से भी काफी पैसा आज में वाइप आउट हो गया है और दोनों ने बहुत ड्रास्टिक फॉल देखा है दोनों मेटल्स ने और इसकी वजह से क्या रेपरकशंस होंगे और क्या मैं इसलिए अपने गोल्ड और सिल्वर स्टॉक्स भी देखता रहता हूँ बीच बीच में कि कैसे कर रहे हैं वो क्योंकि इवेंचुअली जैसे आज मैं देख पा रहा हूँ काफी मैसिव लॉस रहा है एक ही दिन में काफी सारा पैसा मेरा वाइप आउट हो चुका है पर जो है ना मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल फेज में चल रही है बहुत ही अनसर्टेनिटी का माहौल है ऐसे में ये इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर ट्रम्प भी बने हुए हैं इसमें और अगर मैं कहूँ तो प्रेडिक्शंस करना ना अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यूजर 936712 बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में तो क्योंकि ऐसे टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ कि कि गोल्ड और सिल्वर जो कि सेफ हेवन एसेट्स थे उनमें से ही अब एक दिन में इतना ज्यादा मनी वाइप आउट हो जा रहा है इतना ड्रास्टिक फॉल आ जा रहा है और ये रिकॉर्ड हाइस पे थे अपने दोनों राइट गोल्ड भी सिल्वर भी $5600 तक चला गया था गोल्ड का प्राइस राइट तो ऐसे में अब एकदम से एक दिन में इतना ज्यादा फॉल आ जाता है अच्छा अगर आप देखें तो डॉलर भी यूएस डॉलर भी 4 साल के अपने लोएस्ट पे है पिछले 4 सालों में इतना लो कभी नहीं रहा है जितना अभी रहा है और ये ट्रम्प के आने के बाद से बहुत ही ज्यादा लो रहा है और हालांकि ट्रम्प इसको बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं हाँ हाँ ही इज नॉट वरी ऐसे बात करते हैं वो इस बारे में लेकिन
अब ऐसे टाइम पे मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही अपने लाइव स्ट्रीम पे बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि जब ये वक्त चल रहा होता है, जब डॉलर वीकन हो रहा होता है, तो बिटकॉइन के लिए ये पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है, पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अगर डॉलर का भाव गिरता है तो बिटकॉइन का इवेंचुअली ऊपर ही जाता है, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। बिटकॉइन तो मतलब फॉल करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। पर आज खैर कह रहे हैं लोग कि लेवरेज निकल रहे हैं मार्केट से, जो मैं भी एक्सपर्ट आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव्स में से जो जितना भी लेवरेज है वो सारा बाहर निकल रहा है मार्केट में। लेकिन क्या अब ये 75,000 की तरफ जाएगा या ये यहाँ से उठेगा गिरेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। इट इज़ अ वेरी precarious situation and it is very tough to predict also, because अगर आप देखो कि गोल्ड के प्राइसेस, गोल्ड के साथ बिटकॉइन का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इवेंचुअली वो अपने साथ साथ बिटकॉइन को भी ऊपर खींचता है, और जब गिरते हैं गोल्ड के प्राइसेस, जैसे कि आज गिरे हैं, तो बिटकॉइन के भी आप देख सकते हो कि गिरे हैं। लेकिन अब खाली एक या दो फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करा जा सकता है। ये जो रीजंस, जो जितने भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट डाउन टू वन फैक्टर, इट इज डाउन टू मल्टीपल फैक्टर्स। ये केविन वॉश का आना, नॉमिनेट होना ट्रम्प के द्वारा, ये भी एक रीजन है। मार्केट में से लेवरेज हट जाना, ये भी एक रीजन है। गोल्ड और सिल्वर के जो मेटल प्राइसेस जो हैं, इनका गिरना भी एक रीजन है कि आज बीटीसी का प्राइस इतना ज़्यादा गिर गया है। उसके अलावा अभी हमने कल परसों ही बात करी थी इस बारे में कि जियोपॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं। ट्रम्प का ये ग्रीनलैंड का कब्जा करने का जो ये इनका ख्वाब है, इनको जो टेरिटरी अपने अंदर लेनी है, ये जो इनको यूएस की टेरिटरी बनाने का इनका जो सपना है, पता नहीं क्या ये ऑब्सेशन है उनका, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ था थोड़े दिन तक। ये ईयू पे टैरिफ्स लगा रहे थे, कभी नहीं लगा रहे थे, फिर उन्होंने मना कर दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके, डेवोस में। इन्होंने कहा कि चलो हम नहीं लगाएंगे, बट हाँ ये बात याद रखना कि यूएस याद रखेगा ये बात। ठीक है, ये एक बात थी। इसके बाद ईरान और यूएस की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ये भी एक जियोपॉलिटिकल रीजन बना हुआ है। और न्यूमरस मतलब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आजकल, एक फैक्टर नहीं है। और ये कंबाइंड तरीके से जब काम करते हैं ना, तब जाके मार्केट जो है इतना ज्यादा ड्रास्टिक फॉल या राइज दिखाती है। तो ये न्यूमरस फैक्टर्स साथ में आए हैं, दे हैव प्लेड अ वेरी बिग हैंड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर टू मेक दिस हैपन, राइट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। और अब जब केविन वॉश भी आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें नॉमिनेट करा है, जेरोम पावल को मतलब इनकम्बेंट पोजीशन थी उनकी की जगह, अब वो आ गए हैं। ये भी एक फैक्टर है ही ऑब्वियसली, क्योंकि उनसे भी एक्सपेक्टेशंस को इतनी पॉजिटिव नहीं है। उनसे भी एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ही विल बी यू नो, मतलब उनसे वो काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट्स में मानने वाले खिलाड़ी हैं। और ट्रम्प से उनकी कैसे बनेगी, एंड वेदर ही इज़ द राइट मैन फॉर दैट जॉब और नॉट, फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन बन गए हैं, वो भी देखना पड़ेगा। बट इस न्यूज़ पे भी काफ़ी लोगों की नज़र बनी हुई थी। अच्छा, इसके अलावा एक मेजर फैक्टर और है, वो ये है कि क्रिप्टो बिल आने की गुंजाइश जो है वो बहुत बढ़ गई है। लेकिन कॉइनबेस ने उससे विड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट। स्टेबल कॉइन यील्ड्स वाला जो फैक्टर है वो उनको बहुत रिंग लग रहा है। तो भाई मल्टीपल फैक्टर्स हैं और ये किसी ना किसी तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट में। और अगर ये क्रिप्टो बिल आ जाता है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली मार्केट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हमने नज़र बनाई हुई है। आज यश अगर आए थे तो उन्होंने भी यही टॉपिक पे बात करी थी, क्लैरिटी एक्ट, जीनियस एक्ट, ये सारी चीज़ें हमारा टॉपिक बनी हुई हैं। एंड लेट्स सी। आज मेरा ये पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं बीटीसी को लेके ये नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन आई एम स्टिल पॉजिटिव दैट द मार्केट विल बी बेरिश इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। Let's see what happens. Let's see in which direction this market goes to.
Welcome to user 811709. If you've not made any kind of deposit today, I'm letting you know that you can deposit as a new depositor if you are. I have an offer with me. You can deposit three or more dollars into your zBit account and you can get 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side, absolutely free of cost. All you have to do is click on the deposit option that is right below on the live stream, right bottom पे दिख रहा होगा. तो भाई वहां पर टैप करो, डिपॉजिट करो और अपना यूजर आईडी मेरे को भेज दो. मेरी तरफ से आपको मिलेंगे 20,000 पेपे या 20,000 शीबा इनू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तुरंत रिफ्लेक्ट होगा आपके बैंक अकाउंट में. तो किस बात की देरी है भाई? अगर आज डिपॉजिट नहीं करा है तो डिपॉजिट करो. मार्केट अभी एक बेरिश रन से होके गुजर रही है. बिटकॉइन इज स्टेबलाइजिंग अ बिट, बट where it will head towards we will have to see in the next few hours, right? नजर बनाए रखेंगे हम. और धीरे धीरे ट्रेड भी करते रहेंगे. भाई जब आदमी इतनी सारी उतार चढ़ाव देखता है ना क्रिप्टो की दुनिया में, एक सवाल बहुत ही कॉमन है आना, और वो ये है कि क्या स्टेबिलिटी जो है, इज इट अ मिथ व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी? यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? It's a very obvious question that can come to anyone's mind when they are trading on a cryptocurrency platform, right? कि क्या स्टेबिलिटी एक मिथ है, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब मोर इम्पोर्टेंटली मिथ है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी. क्योंकि भाई जब जिस दिन आप ऐसे दिन देखते हो ना जो आज जैसे हुआ है, तो भाई ऐसे दिनों के बाद ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही बोले हम, है ना?
क्योंकि भाई न्यूमरस फैक्टर्स होते हैं भाई क्रिप्टो में। क्रिप्टो में प्राइस स्टेबिलिटी मिथ इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो इज बिल्ट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। कैसे मल्टीपल फैक्टर्स? स्पेक्यूलेशन पे बिल्ड होता है, लिक्विडिटी फ्लोज पे बिल्ड होता है, मैक्रो साइकिल्स पे बिल्ड होता है, लेवरेज ट्रेडिंग पे बिल्ड होता है, नैरेटिव्स पे बिल्ड होता है, हाफिंग साइकिल्स पे बिल्ड होता है, वेल बिहेवियर पे बिल्ड होता है, न्यूमरस फैक्टर्स। ऐसे में प्राइस स्टेबिलिटी जो है ना, वो बहुत बड़ा मिथ बन जाता है, क्योंकि वो प्राइस स्टेबिलिटी आने की संभावना है ही नहीं। जब इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है तो प्राइस स्टेबिलिटी कैसे आएगी भैया? प्राइस स्टेबिलिटी लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो बड़े से बड़े एसेट भी हैं आपके, बिटकॉइन ले लो, इथीरियम ले लो, भाई ये 5 से 10% से भी ज्यादा गिर जाते हैं एक दिन में या बढ़ जाते हैं, है ना? तो आप कैसे ऐसे में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो? 30 से 40% पूरे महीने में गिर जाते हैं, 70 से 80% पूरे साल में गिर जाते हैं। तो भाई कैसे प्राइस स्टेबिलिटी आएगी? देर इज नो स्टेबल ट्रेजेक्टरी बेसिकली, ओनली ट्रेंड है एक, और एक उसके साथ जो है वोलेटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ही है। तो क्रिप्टो में भाई स्टेबिलिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना भाई, तो वेरी डिफिकल्ट। ये भाई हम 1 मिनट चार्ट्स देख पा रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट में तो भाई पंप आया जा रहा है। ये देख रहे हो? व्हाट आर दीज कैंडल शोइंग? देखो, अब एकदम से पॉजिटिविटी का ट्रेंड आ रहा था एक, और मैं अभी 50 57 डॉलर के नुकसान पे था, माइनस में। अब देखो कितनी जल्दी यहाँ गिरावट आ रही है, और फिर से अभी आई जा रही है। अभी देखो ये फ्लक्चुएशन देखो आप, कितनी मैसिव लेवल पे होती है यहाँ पे। मैं सारे कॉइन में नेगेटिव ही हूँ अभी, आप देखो यहाँ, इसको छोड़ के, इथेरियम को छोड़ के, ये भी अपने रंग दिखाएगा थोड़ी देर में। ये देखो -12, ये देखो -10। सारा बीटीसी पे ही डिपेंड करता है अल्टीमेटली। अड्डा देख लो -9, और ये बीटीसी हमारा खुद। ये कैंडल्स आप देख सकते हैं कहाँ जाती हुई दिख रही हैं आपको। तो भाई अगर आज आप लाइव स्ट्रीम पे आए हैं और अगर आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो। और देखेंगे बीटीसी में किस तरह का उतार चढ़ाव आने की संभावना है अब नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्योंकि भाई जो होना था मेजर डिसीजन ऑन द फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन, वो तो हो चुका है ऑलरेडी।
मीनवाइल भाई ईरान में भी अगर आप देखो तो अब स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। एयर स्पेस का इवैक्यूएशन हो चुका है क्योंकि डेल्टा फोर्सेस जो है अजरबैजान पहुंच चुके हैं। तो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो एक बार को इट इज हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वॉर। अब देखने की बात होगी कि किस तरह के टेंशन होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, कुछ कह नहीं सकते। ये बीटीसी मेरे ख्याल से भाई बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मैं और भी ज़्यादा यहाँ पे लॉस में जाता जा रहा हूँ। इसी हिसाब से आई विल हैव टू look after my portfolio as well, because the market is such, it's so volatile right now. It was headed for a bearish kind of a phase, but ये देख रहे हो आप लास्ट 1 मिनट के मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ओवरऑल खैर राइज इतना ज्यादा भी नहीं हुआ है अभी कुछ। मार्केट अभी भी बेरिश रन पे ही जाती दिख रही है मुझे, लेकिन 83,000 पे भी है। 75,000 तक वो जाएगी नहीं जाएगी देखने वाली बात होगी। लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस, हाउ इट हैपेंस। और ऑब्वियसली बीटीसी के फिर वजह से सारे इफेक्ट होते ही हैं कॉइन्स इवेंचुअली। This is the 1 minute chart. I deposited 0.65 in Naira, now 900. How do I use it? 0.65 in Naira. User 404529. It will be visible either in your, uh, you know, balance for futures or on spot. एक बार आप देख सकते हो अपना टोटल बैलेंस। इट मस्ट बी विजिबल इन योर in the balance. Now you can, you want to if you've deposited, you can use it on the market, right? Now you can either do futures trading or spot trading. You can do either of the two. How do you do that? You go to the futures option in the center of your screen, right? Then you may, put in an amount here. You can use any coin that you feel like you want to trade in. Put an amount here, and then you make a prediction of whether the price will move up or down from that amount, right? Whether you want to go short or long, where do you expect the market to go, and then you place your bid, right? Then you will see it in your order history or in the positions, open positions, right? You can do that and then let me know.
Welcome to user 818 814 849. You've just left the room. Welcome to user 701800. If you are new to the live stream and if you've not made a deposit, I do have a deposit offer with me right now, and you can use that to deposit money into your account and get some bonus. क्या है ऑफर बता देता हूँ एक बार. आप इंडिया से हैं, आप हिंदी समझते होंगे, तो एक बार आपको बता देता हूँ. मेरी तरफ से आपको मिल रहे हैं 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. खाली $3 या उससे ज्यादा आपको डिपॉजिट करने हैं और आपको मिल जाएंगे 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू. इनमें से एक मिलेगा. आप जा चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. If you've been on the live stream today, we have discussed about various topics, right? Not just one. We've discussed the sudden fall of Bitcoin. We have discussed the reasons behind the fall of Bitcoin, Ethereum, and other altcoins as well. There has been a massive fall in the market. And why has that fall? See how big a fall this is now. See, यही है भाई क्रिप्टो मार्केट. भाई इतनी वोलेटाइल है. माय बॉस user 301795, welcome to the live stream, my boss. I don't understand what you're trying to say, but bro, I can see this drastic fall of BTC right in front of me happening. And again, it is a very volatile market. That is what I would like to say. You're from Morocco. Now, I have been on the live stream since the last 3 hours, and I would like to take some questions regarding today's fall of Bitcoin, right? Why has Bitcoin fallen so much? इसके अराउंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. I will be taking a short 5 minute break and I will be back in the next few minutes. But I will be keeping a close eye on the ETH and BTC prices as well. I'm sure you must be doing the same. I will be back in the next few minutes. Till then, stay tuned, and I will be back in the next few minutes.
Welcome back to the live stream, guys. I hope that you are joining and looking at the numbers as they are rolling out in front of you when it comes to BTC and Ethereum, right? काफी मेजर दिन रहा है आज का, काफी फॉल देखने को मिली है मार्केट में बीटीसी को लेके, काफी सारी चीजें हुई हैं। ये क्लैरिटी ऐप को लेके कुछ चल रहा है, वो भी देखेंगे अपन। और इस मैसिव फॉल की वजह से क्या क्या चेंजेस मार्केट में आए ये भी देखा हमने। Welcome to user 335126. I welcome you to the live stream on zbit.com, and we are live on YouTube streaming as well. The topic of the day has been quite easily the most obvious topic for today has been the fall of Bitcoin. It has seen a tremendous fall since maintaining 89, $88,000 to 83,000, and it has even gone to the extent of 81,000. तो भाई मेजर फॉल हुआ है आज बीटीसी में। उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है। हमने काफी सारे रीजंस देखे एज टू व्हाई ये फॉल आया है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। ऑब्वियसली कोई एक रीजन नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और इन मल्टीपल फैक्टर्स को हमने देखा है, हमने स्टडी करा, और अभी हम ये भी देख रहे थे कि इसमें केविन वॉर्श जो कि अब फेडरल रिजर्व के यूएस में वो बन गए हैं चेयरपर्सन, उनका भी इसके पीछे एक फैक्टर है, उनका आना भी। तो welcome to user 404529 all the way from the beautiful country of Nigeria. I welcome you to the live stream, brother. And I know that you've made some kind of a deposit, but you're not able to view that deposit. Is that so? Anyway, I hope that if you've just joined, the topic for the day has been the sudden fall of BTC. And if you've not made any kind of deposit so far, please go ahead and make so on zbit.com. It's a completely safe and secure platform for crypto trades, crypto future trading. And if you've not made deposits, kindly go ahead and make so. If I go market, what I go to? If you go to the market, click on the market. No, don't go to markets. Don't go to either futures trading. The futures trading option is right in the middle of the screen at the bottom right. When you go click on home, there is this futures option. Click on it. Predict a price for one of these coins that you see in front of you. Then
predict whether it will go down. If you think it will go down, press on red. If you think it will go up, then put on long, press long. Then all you need to do is place your bid and then wait for it. That is how you open a bid, right? Once you've opened a bid, then you can observe it in your futures option. Right here it will show, like I've made a few bids and they've all been bearish. I think that the market will go down, but ever since I made that bid, the market has actually gone up. So that is why all my coins are showing red. But I will wait for it. I will wait till I feel like they are heading in the right direction. Now they're heading according to me. I have not even set a stop loss today. I've been so confident that the market will go down. So let's see whether the market goes down or not. I earned $5 here because of my trades in XAU, but rest of them are in negative only. Not that negative, but yeah, a few positions are at negative, but that's okay. I'll wait for the market to go down. I am expecting it to go down because that has been that it's been that kind of a day, right? मार्केट बेरिश रन पे ही जाती हुई दिख रही है मुझे. So if you've not made any deposit, kindly go ahead and make a deposit. This is the 1 minute chart that is open right in front of me. BTC को लेके we have looked at various reasons as to why BTC has fallen so much today, and we are going to look at even more reasons. I really like that a lot of new people have joined on the live stream. If you like, we are not seeing what are you not seeing? Have you made any kind of deposit? If yes, how much deposit have you made? Did you click on the deposit option right here at the bottom of my live stream? I am asking this question to you, user 404529, all the way from Nigeria. Have you made a deposit by tapping on this icon at the bottom of your screen on the live stream? Right bottom, it shows deposit option. If not, please do so. Please deposit. Only then I'll be able to give you 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe. One of the two. It is only going to help you, not me. Because you can deposit without the deposit offer also, but you will not get bonus. Only if you deposit from here, you think that you are showing us on your phone. You are not able to see this deposit option. I find it very uh, amusing because it is right here at the bottom on the live screen. Okay, I'll just close the app and I'll show again. Open the app, you see this live option, you click here. Now you see at the bottom there is this deposit option. Click on it, tap on it. Once you tap on it, you will see this fiat deposit option. Deposit money from here. Once you've deposited money by selecting the payment mode more than $3, then you have to come to this screen, the future screen in the center. Place a amount here, or this is BTC. If you want to use any other coin, you can choose any other coin. Place an amount here and then make a prediction. For example, my amount is somewhere around 2740. Finish. Sorry, 2740. Finish. It says that I have insufficient balance because I have spent all my balance. I don't have any balance, but if you have put any amount of balance, it will show here. Then you can buy long or buy short, sell short, because you can then predict whether the market will go down or whether it will go up. I hope you've understood it now. I've tried my best to explain it to you.
Please go ahead. When you deposit, only deposit from the option that is shows on the live stream window. Deposit option right at the bottom right of the screen.
Is it green or red? User 782817, welcome to the live stream. I hope you are joining and looking at the numbers today. The following numbers of Bitcoin. It's been that kind of a day. Bitcoin has fallen immensely in the last few hours. The market looks like it is heading towards a bearish pattern, bearish flow. That is what we are looking at. And I am placed my trades accordingly. So I am asking you this question, user 404529. I hope you're here. User 404529. I hope you are here. You can hear me now. I just want to know that the futures, the futures option, when you tap on it, if you want to look at it, is it showing green or is it showing red? That is all I'm asking you, because you asked uh, a question. I welcome user 889643 from Indonesia. I hope I am. If I want to sell my trading, what I go to. That is why I'm asking you, user 404529, all the way from Nigeria. I'm asking you whether you can see this in profit or in loss. Only then you should withdraw your money, or you want to close your trade. If you want to close your trade, there is an option available to close or close all trades, right? But I would suggest you to only do that once you are in profit. How can I sell my trading? Yeah, if you are in profit, then I think you should sell your trade and put tap on close all. That is how you can place the order. Whatever profit or loss you will be having, then will be, you know will be deducted from your account, right? If you wait, like I am waiting, I have $22 profit in my account, but I feel like I can make more, so that is why I am not closing this trade right now, right? I am not closing this trade right now because I know I can make even more profit. Once that happens, I will close this trade. Once you close that trade, you will see it reflected in your account.
भाई वेलकम बैक टू द लाइव स्ट्रीम। अगर आप देख रहे हैं तो बिटकॉइन भयंकर it's rising falling, the sentiment is again building. There is some kind of resistance as well. You can see market as it is again going up slightly. और फिर कितना नीचे जाता है देखना पड़ेगा। Important that we hold our horses and keep looking at the charts. काफी हॉकिश माना जाता है इस बंदे को, यानी ही प्रेफर्स policy is a policy maker who wants higher interest rates to control inflation basically. User 520441, if you've just joined on the live stream, I was discussing about Kevin Walsh, who has been appointed as the Federal Reserve chairperson now. And this person, Stanley Drunken Miller, has been in support of Kevin Walsh being appointed by Donald Trump as the Federal Reserve chairperson. And he feels that the branding of Kevin as someone who's always hawkish is not correct. Hawkish here means that someone who is always looking to make policies that have higher interest rates to control inflation in the economy. Uh, that image is not right according to uh, this guy Stanley Drunken Miller. He says that this image of his is not always true. That is not how he operates.
And this person has worked alongside uh, Kevin Walsh at this company of his, Duquesne Capital Management, and therefore it looks like this person, Drunken Miller, does know about Kevin Walsh and his appointing by Donald Trump on the last night when he was supposed to be the first choice. The markets had plunged to 81,000 as well. Currently, they are at 83,300, but they are still fluctuating. There was a dip a few minutes back as well, and the lowest in the 15-minute period was still 82,344. Again, it has you know stabilized a bit, and it is somewhere around 83, 900, like something like this. Let's see how this market changes. I could not think of a single other individual on the planet better equipped, according to Drunken Miller. This is for Kevin Walsh. So let's see how this appointment of Kevin Walsh by Donald Trump turns out to be for the United States of America and for the Federal Reserve, because it is definitely a topic that has been doing the rounds in the news media since a very long time. And now that this has actually happened and this has materialized, Donald Trump has nominated this guy to take over. Now let's see how the cryptocurrency market progresses towards, because there needs to be a lot of changes brought about when it comes to the Clarity Act as well, because there is some kind of momentum that was building, but now because of the because of the support that was withdrawn by Coinbase in the last few days, there is a possibility again that Clarity Act will be delayed further as well. So there is no particular timeline on that, but once that regulatory framework does come in and investors and traders do have a you are bounded by regulations and there is some proper structure to the cryptocurrency industry. I A lot of people, not just me, believe that it'll bring a massive change in the cryptocurrency world, and it will also see an influx of more money being pumped into cryptocurrency, and cryptocurrency means particularly Bitcoin, right? So let's see what happens and how it happens. Whether this appointing of Kevin Walsh is a good step, or is it even in the right direction or not. Meanwhile, my PNL is at 19.48 USDT negative. I'm still waiting for more people to deposit today, because it's a bearish market that I expect. Uh, Although it looks like it has stabilized a bit, but meanwhile, if you've not deposited so far today on zBit, and if you're a new depositor, new on zBit, I do have a deposit offer with me right now. You can deposit $3 or more, and I can give you 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side, absolutely free of cost. I've been telling this since the last 3 4 hours. Go ahead and deposit as much as you want. I'll be here for the next few minutes. If you have any more questions, I will be entertaining that. You can send me any comments that you have to make on zbit.com or on the live streaming YouTube platform, anywhere. I am listening to all of you. Any questions that you have, I will be answering them one by one. Meanwhile, I'll also look at my portfolio, which is pretty much in the negative right now, but I'll wait for it. I'll wait for the market to get even more bearish. I'll keep an eye on it even after this live session. That's how I am as a investor, right? I have trade made trades today, but ever since I made trade, the market has slightly stabilized or gone up.
I expect it to go down even further down, but I'll have to wait and see what happens. Even after this life ends, I will be looking at all my trades, and then I will be eventually closing all my trades when I am in profit. Welcome to user 973-188. You've been here since the last few minutes. And if you've not made a deposit, kindly go ahead and make so. I'm coming towards the close of my live session today. I have discussed the fall of Bitcoin, the reasons behind that fall, uh, derivatives and leverage being wiped off the market, and the appointing of Kevin Walsh as the Federal Reserve Chief after Jerome Powell, after Trump has nominated him, and what that holds for the cryptocurrency industry and what that holds for the US markets. We've looked at that, and I've also looked at, I've made quite a lot of trades as well. I'm waiting for them to materialize and to get into the positive, pattern. Show some kind of positive, uh, you know change. Uh, I expect the market to go bearish from here, even more bearish. I expect the market to go lesser than 80,000 as well, to be honest. I could be wrong, that's okay. But it is so volatile, this market, that no prediction at the moment can, you can be sure of no prediction at all. So let's see where this market goes. It has, shown both curves in the last few minutes. It has shown to go in both the directions, whether bearish or bullish. But obviously, it has left majorly from 89, 88,000 to around 83,000, and it had even gone to 81,000. So you can't be sure of what's happening here in the world of cryptocurrency. And that is why I also looked at another question: that is stability a myth in the world of cryptocurrency? Yes, it very much is.
and we discussed that as well. So you've seen now right in front of you, it has come down to 80, less than 83,000 as well. And it is showing signs of going even steeper than that. So let's hope and see where this fall leads to. I'll be here for the next 5 7 minutes, and then I'll be heading off. Frankly, I would want to exit on a very positive note today as well. So if this market does fall to below, something below 82,959, uh, I will look to withdraw. But I do expect it to go somewhere even around 82,000 today. It's currently at 83,000. I expect it to go even lesser than 82,000. So let's hope and see where it goes. Do keep an eye on this. This is the magic number. अगर आपके कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो आज के बिटकॉइन के क्रैश के बारे में। जो भी सवाल है पूछना है पूछ सकते हो। मेरा अब लाइव सेशन से जाने का टाइम हो रहा है गाइस। आई वेलकम यूजर 363791 ऑल द वे फ्रॉम नाइजीरिया। आई होप यू आर कीपिंग अ क्लोज आई एट द price of bitcoin in Nigeria as well. I'll be here for the next 10 minutes or so, and then I will head off.
user 886320. If you've not deposited and if you're new on the zBit app, please deposit using the deposit option right at the bottom of the screen. I'll be heading off now, guys. It's been an absolute pleasure having all of you here. I'll be keeping a close eye on all my trades today. I am hoping that the market goes even further down. Let's see if that happens or not. It's my time to say goodbye. I'll be meeting you tomorrow at the very same time. Till then, take care, goodbye, and stay very healthy.